Class 7. Today we are going to study synthesis of plant food other than simple carbohydrate. The simple food synthesized by plant by photosynthesis is a simple carbohydrate called glucose. जो सिंपली फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट अपना फूड बनाते हैं वो क्या बनता है? ग्लूकोज. द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट से बने होते हैं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, that is carbon, hydrogen and oxygen. The plant use the simple carbohydrate glucose to make many other foods such as starch, oil, proteins and vitamins. Now let us discuss these three one by one. First, plant make starch as a food. How plant make starch as a food? Some of simple carbohydrate glucose made by the plants through photosynthesis is converted naturally into complex carbohydrate called starch. कुछ कार्बोहाइड्रेट जो सिंपल ग्लूकोज से बनते हैं मेड बाय द प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस के इज कन्वर्टेड नेचुरली वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाते हैं, दैट इज स्टार्च. द स्टार्च इज फूड विच इज़ स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट. और स्टार्च वो ये टाइप ऑफ फूड है जो कि प्लांट के अलग अलग पार्ट में क्या होता है? स्टोर होता है. दैट आर द पार्ट ऑफ द प्लांट आर रूट, स्टेम, लीव एंड सीड. फॉर एग्जाम्पल, the seed or grains of wheat and rice have lots of starch in them. Potato and carrot plant are also store lots of starch in their root. तो आपने देखा होगा, कभी कभी देखा होगा घर पे जब आपकी मदर क्या करती हैं, पोटैटो बॉईल करती हैं कट करके, तो जो पानी होता है वो थोड़ा स्टिकी सा हो जाता है और थिक हो जाता है. वो क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ द स्टार्च ऑफ द पोटैटो. Now next is plant makes oil as food. How plant make oil as a food? Certain plant converted the simple, कुछ plant ऐसे होते हैं जो simple carbohydrate ग्लूकोज को जो फोटोसिंथेसिस से बना होता है उसको किस में चेंज करते हैं? ऑयल में चेंज करते हैं. एंड स्टोर देम इन देयर सीड. और वो कहाँ स्टोर की जाती है? सीड्स में. Such seed are called oil seed. They give us oil, fat for cooking food. For example, the seed of sunflower plant contain lots of oil stored in them. We can extract oil from sunflower seed use it as a food. The oil obtained from the plant are commonly known as vegetable oil. Please note that just like carbohydrate, glucose, starch, oil is also made up of same 3 element, that is कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये भी तीन प्रॉपर एलिमेंट से बने होते हैं, दैट इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसमें हमने अभी 2 चीज़ पढ़ी. स्टार्च क्या होता है? वही सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होते हैं बने हुए, वही नेचुरल प्रोसेस से किस में हो जाते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हो जाते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टार्च. नेक्स्ट उसके बाद हमने फैट ऑयल कैसे पढ़ा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में ऑयल में चेंज हो जाते हैं और वो कहाँ स्टोर होते हैं? उनके सीड पार्ट में. एंड कौन कौन से सीड पार्ट से हमको मिलता है? लाइक है आपका मस्टर्ड, वो भी सीड पार्ट है, उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है. नाउ प्लांट मेक्स द प्रोटीन एज फूड. हाउ प्लांट्स मेक प्रोटीन एज फूड? In addition of carbon, hydrogen and oxygen, protein also contain nitrogen element. जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में नाइट्रोजन एलिमेंट होता है, सेम वे प्रोटीन में भी होता है. प्लांट कंबाइन सम ऑफ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट क्या करते हैं? दे कंबाइन सम ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं नाइट्रेट मिनरल से, विच इज़ नाइट्रेट मिनरल टू अमीनो एसिड. और किससे मिलाते हैं? टू मेक क्या बनाते हैं उससे? अमीनो एसिड बनाते हैं, विच आर देन मेड इनटू प्रोटीन्स. फिर से सुनिए इसका, मे बी यू हैव कंफ्यूजन. इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट. कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जैसे नाइट्रोजन एलिमेंट होते हैं, सेम वे प्रोटीन में होते हैं. प्लांट क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विथ नाइट्रेट मिनरल्स. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं? वो नाइट्रेट मिनरल्स के साथ कंबाइन करते हैं और क्या बनता है? अमीनो एसिड मिलता है. जस्ट गो थ्रू इट केयरफुली. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट और किसको कंबाइन करते हैं? नाइट्रेट मिनरल्स को कंबाइन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? टू मेक अमीनो एसिड, विच इज़ देन
मेड इनटू प्रोटीन, और लास्ट में क्या बन जाता है, प्रोटीन. इन दिस वे प्लांट्स मेक प्रोटीन एज फूड. और इस तरह से प्लांट क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं. अंडरस्टूड हाउ दे मेड स्टार्च, हाउ दे मेड ऑयल एंड हाउ दे मेड प्रोटीन एज फूड. प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस, बहुत नाइट्रोजन होता है, विच कंटेन लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट. नाउ वी विल डिस्कस फ्रॉम where do plant obtain nitrogen for making protein. How plant obtain nitrogen for making protein. This will happen as follow. Nitrogen element, this happen as follow. Nitrogen element present in abundance of air. As we all know that 78% of our atmosphere is covered with nitrogen gas. However, the plant cannot absorb nitrogen. Plant nitrogen absorb नहीं कर सकते हैं, but they cannot absorb nitrogen gas from their need. Now the soil has certain bacteria which convert nitrogen gas of air into nitrogenous compound and release them to the soil. क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में क्या करते हैं, फिक्स. उनको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज. नाइट्रेट आर द वाटर soluble and nitrogen compound which are absorbed by the plant from the soil along with water. In this way the plant fulfill, और वो नाइट्रोजन कंपाउंड क्या होता है, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, एंड दे एब्जॉर्ब बाय द रूट ऑफ द प्लांट. द प्लांट ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर. कुछ नाइट्रोजनियस मैन्योर और फर्टिलाइजर आपको बताया था कि मैन्योर कैसे बनता है, फर्टिलाइजर कैसे बनता है. फर्टिलाइजर क्या होता है, वाटर में ईजिली सोल्यूबल होता है और जो कि प्लांट्स रूट क्या करते हैं, ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं. तो नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर के थ्रू भी प्लांट्स रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेंगे, विच द फार्मर एड to the soil in the field from time to time. Now plants make vitamin as a food. How plants make vitamin as a food? Vitamin are highly complex substance. Vitamin कई चीज़ों से होता है, vitamin A, vitamin B, they are complex substance which are very important for the part of our food. Or vitamins are made by plant. Vitamins are contained इन वेजिटेबल, फ्रूट एंड सीरियल्स. विटामिन किन में पाया जाता है, वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, सीरियल्स में, मेड बाय द प्लांट. एनिमल यूजुअली कैन नॉट मेक विटामिन एंड वी कैन नॉट, वेदर द ह्यूमन बीइंग और एनिमल, वी कैन नॉट मेक द विटामिन फॉर अस. हु मेक्स इट फॉर अस? प्लांट मेक्स starch as a food for us, plant make oil as a food for us, plant make protein as a food for us, and plant make vitamin also as a food for us. Now importance of photosynthesis. Photosynthesis is important for the existence of life on the earth. In the absence of photosynthesis, life would be not possible on the earth. This is due to the following reason. Why life is not possible without the photosynthesis? Photosynthesis by plant provide food to animal including human being also. So the survival of animal depend on the food made by the plant by photosynthesis. In the absence of photosynthesis, there would be no plant on the earth and hence there no animal will survive. As we all know, plant cannot survive without the photosynthesis. They prepare their own food by the help of sun, carbon dioxide, water. So this process known as photosynthesis. Without having a photosynthesis, plant cannot survive, and if there is no plant on the earth, and hence no animal will survive. जब plant नहीं होंगे तो where the animals get the food for human beings? So if there is no plant on the earth, there is no animal or not a single man can survive on the earth. The process of photosynthesis by plant put oxygen gas into the air, which is very most important gas for us and for animal for the breathing. As you all know, we breathe in oxygen and we give out carbon dioxide to the back to the atmosphere, and this whole exchange of gases cycle goes on and on. If there is less number of plant, what will happen? Lots of pollution will happen, and having a problem in exchanging of gases. It is this oxygen gas which the animal are used for breathing and respiration. In the absence of photosynthesis, there would be no oxygen in the air and hence no animal could exist on this earth. So if there is no plant is not on the earth,
there will be no exchange of gases take place on the earth, and animal or human being cannot exist on the earth. Now the other mode of nutrition in plant, we will study it tomorrow. Have a nice day. Bye bye. But please do a fair revision work. Have a go through the till to page number 7, importance of photosynthesis heading explanation. Have a revision, and if you have any kind of question arise, please give a comment and I'll give you answer. Other mode of nutrition in plant we will study in the next class. Go through it please very carefully.